come again. So we have done all the adjustments now. Just we have to write the totals. This total will be 2,51,055 and this will be 88,98,051. Nothing is there. Nil. ये दोनों का टोटल 29,231. ये दोनों का टोटल 86,317. Nothing is there in current asset. We can write nil. This already we have written. And other items में you get ये दोनों को ऐड करके 2825 डन. सो हियर ऑल्सो जहाँ पे कुछ नहीं है, जहाँ पे कुछ भी आइटम्स नहीं है, देयर वी कैन राइट नील. नील ये तो इट इज लास्ट ईयर एप्रोप्रिएशन लिखा था और नीचे चला गया. Now let us tally. Let us tally and find out whether it is a surplus or a deficit. Credit side, what are you getting? Credit side 16,99,152,11,263,86,112. ये सबको ऐड करते हैं तो we get 29,79,777, 29,79,777. And now ये सबको माइनस करके what are you getting? 3,41,324, 14,035, 125,045, 130,485, then 17,524, 148, 310, 675, 783, 131, 972, and the depreciation 71,996, 1172, 1858. सबको ऐड करके yes माइनस मतलब योर सरप्लस इज मोर देन योर एक्सपेंसेस. आपका इनकम ज़्यादा है तो आपको क्या आंसर आ रहा है? आपको पॉजिटिव आंसर आ रहा है 132,980. दिस इज द सरप्लस. एंड व्हेनेवर देयर इज अ सरप्लस हमें एक और अकाउंट बनाना पड़ता है दैट इज नोन एज, हियर आई विल प्रिपेयर मेमोरेंडम एप्रोप्रिएशन अकाउंट. हमें क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा? मेमोरेंडम लास्ट टाइम व्हाट वी हैड डन वहाँ पे डेफिसिट हुआ था, इसलिए वी हैव नॉट प्रिपेयर दिस अकाउंट विच इज मेमोरेंडम एप्रोप्रिएशन अकाउंट. इसका कोई भी इफेक्ट हम लोग पास नहीं करेंगे. इसको हम लोग क्या करेंगे? इसका इफेक्ट पास नहीं करना है. इसका इफेक्ट कब पास करना है बैलेंस शीट में? व्हेन दिस इज अप्रूव्ड बाय द जनरल बॉडी. जनरल बॉडी जो कमिटी है वो अगर इसको अप्रूव करेगा तो ही, अगर क्वेश्चन में मेंशन है इट हैज बीन अप्रूव्ड, देन ओनली वी विल गिव द सेकेंड इफेक्ट. नहीं तो जस्ट इसको बना के वी विल हैव टू कीप.
दैट ये अप्रोप्रिएशन बना के रखा है, देयरफॉर मेमोरेंडम अप्रोप्रिएशन। तो कितना सरप्लस मिला हमें वो यहाँ पे लिखेंगे, इधर लिखेंगे एक बाई, सबसे पहले बाई बैलेंस बॉट डाउन, दिस विल बी लास्ट ईयर्स प्रॉफिट। लास्ट ईयर्स प्रॉफिट कितना है, लॉस होगा तो टू बैलेंस बॉट डाउन लिखेंगे। अब प्रॉफिट है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, यहाँ पे हमने लिखा है ना सरप्लस फॉर लास्ट ईयर 6,19,986, और इसके नीचे लिखेंगे बाई सरप्लस, करंट ईयर का सरप्लस। सो सरप्लस कितना है, अभी मिला 132,980। इसके बाद ये साइड में बहुत इंपॉर्टेंट है, टू स्टैचूटरी रिजर्व, टू स्टैचूटरी रिजर्व, स्टैचूटरी रिजर्व में हाउ मच विल बी ट्रांसफरिंग 25%, जो भी हमारा प्रॉफिट है 132,980, उसका 25%। सी हाउ मच यू आर गेटिंग, 132,980 का 25%, हाउ मच आर यू गेटिंग, आर यू गेटिंग 33,245, 33,245। अभी हम क्या करेंगे, ये मिलने के बाद और कोई अप्रोप्रिएशन क्वेश्चन में बोला नहीं है, वी विल क्लोज दिस अकाउंट, सो वी विल गेट क्रेडिट इज हैवी 7,52,966, 7,52,966, और जो भी अमाउंट आएगा उसको बोलेंगे माइनस करके टू बैलेंस कैरीड, टू बैलेंस कैरीड डाउन, माइनस करके व्हाट अमाउंट यू गेट, you get 7,19,721. So with this memorandum is done. अभी क्या करना है हमें, सरप्लस तो हमने मेमोरेंडम में ट्रांसफ़र किया, अभी जस्ट ये इसको छोड़ के लिविंग दिस ऑथराइज कैपिटल हमें सबको ऐड करना है, 17,500, 136,215, 80,46,287, 6,71,849, जिसमें भी कुछ भी नहीं है उसे नील लिखना है, नील। एंड ये जो हमें लास्ट ईयर का सरप्लस मिला है, लास्ट ईयर का सरप्लस में करंट ईयर का जो लास्ट ईयर का बैलेंस में ऐड करेंगे करंट ईयर का बैलेंस जो कि है, कुछ भी अप्रोप्रिएशन स्टैचूटरी रिजर्व जो हमने ट्रांसफ़र किया उसका इफेक्ट नहीं देना है, डायरेक्टली जो सरप्लस आया है वो लिखना है, एड सरप्लस 132,980, यू विल गेट 7,52,966, 7,52,966, एंड वी हैव टू डू द टैली, कितना टैली आ रहा है, टैली अमाउंट क्या आ रहा है, we have to see that what tally amount we are getting, ये सबको ऐड करके we should get 96,24,817. Same way we have to see whether asset side also we are getting the same amount, 25, 2,51,055, 88,98,051, 29,231, 29,231, 86,317, 3,18,260, 10,546, 10,532, 20,825, ये सबको ऐड करके वी शुड गेट 96,24,817. If we get that amount, our answer is tallied. We can say that our balance sheet is tallied and we are on the right track. With this, the sum is done. From the following trial balance, as on 31/3/2015, prepare final accounts in the prescribed format applicable
as per applicable legal provisions. So this one, come, let us, the name is Panchavati Cooperative Housing Society. Particulars: 1, here debit side asset, expense, credit side liability, income. So the basic of the trial balance final accounts will remain the same. Debit side will be asset or expense, credit side of the trial balance will be income or liability. So one share of MDC cooperative bank, ये one share खरीद के we have done an investment, and one share of MDH Federation, ये भी one share खरीद के we have done investment. Accounting charges is establishment expense, annual day function is establishment expense, audit fees is establishment expense. एक तो establishment expense होगा या property expense होगा, तो ये सब establishment expenses है. Then we have cash in hand, cash in bank, cash on hand. This is cash in bank balance. Deposit for water, any type of deposit, other item. Depreciation will come in the other expenses. ये asset में आएगा deposit for water, other items, and ये income and expenditure में other expense. Electricity charges is an important expense, property charge expenses. Expenses on lift also is related to property, तो property expenses में आएगा. Fixed deposit, ये फिक्स डिपॉजिट जो है ये इन्वेस्टमेंट है फॉर मेजर रिपेयर फंड्स के लिए जो डिपॉजिट जमा करके रखा है. फिक्स डिपॉजिट इज ऑल्सो इन्वेस्टमेंट. फर्नीचर एंड फिटिंग इज असेट. हाउस कीपिंग इज एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंस. इंश्योरेंस चार्जेस, insurance charges is property expense. Meeting expenses meeting expenses establishment. Postage is establishment. Professional fees is establishment. Property taxes is property expense. Reliance infra deposit, this is other item in the asset side. Repairs and maintenance is property expense. Salaries, then repairs and maintenance is repairs and maintenance is property. Salary is establishment. Security is establishment. Subscription of housing federation is establishment. Subscription of education fund is establishment. Conveyance is establishment. Water charges is property, important expense. Then we come to the credit side. Collection for property expense is collection for property expense. Collection for establishment expense is income है, which the see जो भी खर्चा करना है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में वो मेंबर से कलेक्ट ही करना पड़ेगा. खुद से हाउसिंग सोसाइटी will not have any income. They have to collect for the expenses. Dividend is dividend and interest. Entrance fees हम statutory reserve में add करते हैं. इंटरेस्ट ऑन एफडी एंड इंटरेस्ट ऑन एसबी, ये हम इंटरेस्ट एंड डिविडेंड में बताएंगे. इंटरेस्ट ऑन मेजर रिपेयर्स फंड एफडी, ये हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग जो रिजर्व होगा उसमें ऐड करेंगे. ये जो कैपिटलाइज करना पड़ेगा ये इंटरेस्ट को. तो रिपेयर्स फंड जो भी रहेगा, रिपेयर्स फंड ओपनिंग है, उसमें वी विल ऐड द इंटरेस्ट ऑन मेजर रिपेयर्स फंड. देन वी हैव सेल ऑफ स्क्रैप, दिस विल बी अदर इनकम. सेल ऑफ स्क्रैप विल बी अदर इनकम. Then we have security deposit from members for renovation. तो ये हम deposits में बताएंगे. Security deposit liability side में, deposit में. Then we have statutory reserve fund का opening. This we will show under opening, reserve and surplus. Subscribed capital, share capital. Surplus for last year income and expenditure में last year का जो balance brought down रहेगा वो करेंगे.
एंड देन ट्रांसफ़र फीस ये स्टैट्यूटरी रिजर्व फंड में ऐड करेंगे. एंट्रेंस फीस एंड ट्रांसफ़र फीस वी कैपिटलाइज, वी ऐड टू द स्टैट्यूटरी रिजर्व फंड. देन वी हैव all the trial balance is done. Now we will come to authorized capital, 3,900 shares of 50 each. So this will be authorized capital due from members for establishment expenses. So due from members for establishment expenses, ये हम लोग एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस को हाईलाइट करना पड़ेगा. इस पे ड्यू फ्रॉम मेंबर्स है. So we will add highlight this. Now what we have, इसमें ड्यू है, ड्यू मतलब आउटस्टैंडिंग, तो ऐड करना पड़ेगा. इसके बाद वी हैव प्रीपेड सिक्योरिटी एक्सपेंसेस. तो सिक्योरिटी वी हैव हियर, उसको हाईलाइट करना पड़ेगा. उसमें देयर इज अ प्रीपेड. इसके बाद वी हैव आउटस्टैंडिंग प्रॉपर्टी टैक्सेस. तो प्रॉपर्टी टैक्सेस को वी विल हैव टू हाईलाइट. देन वी हैव एडवांस फ्रॉम मेंबर्स फॉर प्रॉपर्टी एक्सपेंसेस. सो प्रॉपर्टी एक्सपेंसेस के लिए एडवांस लिया है. सो प्रॉपर्टी एक्सपेंसेस जो है, जो हमने मेंबर्स से कलेक्ट किया है, देयर वी हैव टू हाईलाइट कलेक्शन फॉर प्रॉपर्टी expenses. Then we have repairs to be adjusted from repair to be adjusted from major repairs fund. See, do we have this one, repairs and maintenance? Do we have repairs and maintenance? Let us see, do we have repairs and maintenance? Yes, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस में भी इसको सेकेंड इफेक्ट देना पड़ेगा. और दूसरा जो रिपेयर्स का फंड है उसमें बताएंगे. देन व्हाट डू वी हैव? देन वी हैव collection from members for property taxes include collection towards major repair fund. So this include collection towards major repair fund. क्या? लेकिन collection from members for property expense तो हमने already add किया. इसमें दो चीज़ें हैं. there are two things. मैंने हाईलाइट किया. 1 minute. Establishment expenses में, yes, due from for establishment expense, I have highlighted the amount instead of this. इसमें adjustment है. I had highlighted the amount instead of highlighting the words. Okay, everything has been done. Now what we will do? Now we will start with the sum. Start with the posting. तो सबसे पहले ये तो इन्वेस्टमेंट है. 1 शेयर ऑफ MDC कोऑपरेटिव एंड MDH फेडरेशन, 1,000 and 1,000. तो गो टू द asset side. Investment, 1 share of MDC cooperative bank. Second one, 1 share of MDCH Federation. What is the amount? 1,000 and 100. 1,000 and 100. Now what we have? Accounting charges and annual day function audit fees.
तीनों एक ही जगह आते हैं, अकाउंटिंग चार्जेस, एनुअल डे फंक्शन. विल राइट accounting charges, annual day function, and audit fees. So what are the amount? Let us see. 45,600, 146,305, and 13,483. So let us write accounting charges 45,600, annual day function 146,305, and audit fees is 13,483. Now we have cash in bank, cash on hand 30,54,607 and 3534. कैश इन बैंक असेट में लिखना पड़ेगा. कैश इन बैंक, कैश ऑन हैंड. So what is the amount? The amount is, cash in hand is, cash in bank is 30,54,607 and cash in hand is 3534. दोनों का टोटल भी लिख लेते अभी. 30,58,141. Now let us go. We have deposit for water 10,900. Other items, deposit for water amount कितना है? Deposit for water, the amount is 10,900. What is the next one after deposit for water? We have depreciation 96,100. Other items, other expense में depreciation 96,100. 96,100. After this, what we have? After depreciation, we have electricity charges and expenses for lift 6,91,760 and 1,43,294. तो दोनों में एडजस्टमेंट नहीं है. We will write electricity charges, then expenses on lifts. What is the amount? Electricity charges 6,91,760 and expenses for lift 143,294. Then what we have? Fixed deposit major repair fund. This is a investment and fixed deposit. So let us write the investment fixed deposit and fixed deposit major repair fund. Fixed deposit major repairs fund. What is the amount for both? 16,65,41, 1 crore
1,699. So amount for this one is 16,65,041 and 1,01,699. When we now only this many investments are there, so let us add all these. We will get 1,67,840. Now what is there? Furniture and fitting, fixed asset 5,03,934. फर्नीचर एंड फिटिंग फिक्स सेट में जाएंगे. फर्नीचर एंड फिटिंग नो एडजस्टमेंट. फर्नीचर एंड फिटिंग डायरेक्टली विल राइट इन द लास्ट कॉलम. Furniture and fitting, what is the amount? 5,03,934. Now we have housekeeping, 3,18,672. हाउसकीपिंग लिखना है. हाउसकीपिंग 3,18,672. After housekeeping, what we have? Insurance charges 28,116. So we will write insurance charges. Insurance charges is 28,116. After insurance charges, we have meeting expense, postage and professional fees. Meeting expense, postage and professional fees. So we will write here meeting expense, postage and professional fees. What is the amount of all the three? 6788, 2632, 41415. So meeting expenses 6788, postage 26,332 and professional charges 41,415. So with this all the three written, now we have property taxes. There is an adjustment 15,24,38. So property taxes adjustment, property taxes, the amount is property taxes, the amount is 15,20,438. After property taxes, Reliance Infra deposit 26,200. Deposit, so asset side में, debit side में deposit means Reliance Infra deposit. Reliance Infra deposit is the amount. Reliance Infra deposit, it is 26,200. Only two deposits are there, so the total will come to 37,100. Then after this we have salaries, security, there is adjustment, salary and security 247,500, 787,105. So we will write salary and
security. So salary ka amount directly we can write in the last column. Salary is 2,47,500 and security we will write in the inner column 7,87,105. Then we have subscription for Housing Federation, subscription to Education Fund, conveyance. So we'll leave one line, subscription to Housing Federation. Then we have subscription to Education Fund, subscription to Education Fund. Then we have conveyance. So what is the amount? 720, 348, 47, 524. So एजुकेशन फंड सॉरी हाउसिंग एजुकेशन फंड बाद में, पहले हाउसिंग फेडरेशन का है 720, एजुकेशन फंड 348 एंड कन्वेंस इज 47 524. Now we have water charges 135,716. So water charges is property expenses. So water charges you will write in the outer column water charges. What is water charges? 1,35,716. So this thing we will adjust and debit side is done. Debit side is done. Now we come to the credit side. Collection for property expenses 41,10,646. So collection for property expenses, inner column में we will write 41,10,646. Then we have establishment expense 33 lakh 111. So establishment expenses, collection for establishment expenses. What is the amount? 33 lakh 111. Then we have dividend. Dividend is 60. So we will write interest and dividend में. Dividend is 60. So dividend, directly outer column I will write 60. And then we have entrance fees which has to be added to the statutory fund. While doing that only we will write then interest FD and interest SB 5,27,05 64,797. So interest FD. So we after dividend we have interest FD and interest saving bank. So what is the amount? Interest FD is 5,20,705 and interest SB 64,797. Then we have interest on major
interest on major repairs fund and major repair funds opening. तो reserves and surplus में जाते हैं. We will write statutory. First one should be statutory reserve opening. Then we have add entrance fees, and we have add transfer fees. इसके बाद we will write major repairs fund. इसमें ओपनिंग दिया हुआ है and we will add interest on major repairs fund. Interest on major repairs fund. So इसका amounts देख लेते हैं. Let us see the amount. So the amount is major repairs and opening 53,63,976. So we'll write here 50 opening of this one. Major repairs fund का opening is 53,63,976, and then we have interest. What is the amount of interest given? Interest on major repairs fund FD is 5,58,841. 5,58,841. 5,58,841. Then what we have in the credit side? We have entrance, entrance fee 600 that we have not written. So we'll write here, entrance fees is 600, and then let us go. Sale of scrap. Sale of scrap is other income 5375. So other income में sale of scrap, sale of scrap, sale of scrap is how much? 5375. Then what we have after sale of scrap? We have security deposit from members for renovation 45,000. So we have deposits ka head. We have the head for deposits. There we will write security deposit from members for renovation. From members for renovation 45,000. Last column, we'll write in the last column renovation 45,000. We'll write 45,000. Then what we have? Then in the question, what do we have? We have statutory fund opening 18,87,657. We have 18